ओके। हाँ, तो आप मुझे कभी भी इंटरप्ट करिए, इट्स अ टू वे थिंग है ना, हम दोनों बात कर रहे होंगे। और हाँ, वैसे ही होगा। तो क्या लिनक्स की रिक्वायरमेंट है? लैम्प्स अगर आप करना चाहते हैं तो लैम्प्स के साथ एटॉमिक स्केल सिमुलेशंस के लिए रिकमेंडेड होगा कि आप लिनक्स यूज करें किसी फॉर्म में। विंडोज में पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं, है ना, लैम्प्स विंडोज के लिए भी है। पर यूजुअली वो स्लो रिस्पांस होगा उसका। और जीयूआई भी है लैम्प्स का विंडोज में। अच्छा, तो अच्छा है। हाँ, क्या चीज? तब तो अच्छी बात है ना मतलब हाँ, इससे। जीयूआई है, जहाँ पर आप, जीयूआई में क्या है, बस एक टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली। वहाँ पे आप लैम्प्स कमांड्स लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। तो इट्स हेल्पफुल एज अ बिगिनर। पर इज इट लाइक रियली गुड? आई वुडेंट से सो। अभी भी डेवलपमेंट फेज पे है वो। ओके। हाँ। तो क्या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं पीसी पे, लैपटॉप पे? हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। और विंडोज में भी एक होता है, विंडोज सब सिस्टम लिनक्स, समथिंग लाइक दैट, WSL। तो वो डाउनलोड करके उसमें आप लिनक्स डाल सकते हैं। लिनक्स में उबुंटू या फिडोरा, उबुंटू इज यूजुअली द बेस्ट। और फिर सब कुछ यूज़ कर सकते हैं जैसे आप इसमें यूज़ करेंगे। थोड़ा सा डिले रहेगा क्योंकि हर बार उबुंटू को कम्युनिकेट करना पड़ेगा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के साथ। पर इट वर्क्स। हाँ। उसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेस शेयर कर सकता हूँ। नीरज, नेक्स्ट क्या? मीटिंग कर रहा हूँ मैं, तो आई होप इट डजंट डिस्टर्ब यू, तुम अपना वो ऑन कर रखना। तो या अच्छा, लैब में हो क्या? हाँ। अच्छा, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है उसको हम लोग मतलब किस किस सॉफ्टवेयर से यूज मतलब सिमुलेट कर सकते हैं? मैंने सुना है गवर्नमेंट से बहुत सारा है, हम्म। मतलब बहुत सारा है कुछ। तो हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर बिगिनर्स क्या जरूरी है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? फॉर beginners, what can we do? Let's see. Where is text? Not sure. Nonetheless, I can open a text file here. एक तो आपके पास लैम्स है ना, जिसमें कमांड बेस्ड काम होगा। आप कमांड्स लिखेंगे और काम होगा, है ना। आपको लैम्स को बताना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मेट में कि आप क्या करना चाहते हैं, है ओके। ना। जैसे कि एक सिमुलेशन सेल क्रिएट करो जिसका डायमेंशन XYZ है, और उसमें 4,000 कार्बन डालो, उसमें 6,000 हाइड्रोजन डालो। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा लैम्प्स को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख करके। तो टेक्स्ट इस तरह से फॉर्मेट में लैम्प्स। मतलब क्या, मतलब कि इसका भी कोई कोड होगा ना, जैसे मैटलैब सी प्लस कोड होगा, हाँ हाँ, वही सिंटैक्स होता कमांड्स। है? हाँ। और इसके अलावा आपके पास पाइथन बेस्ड है एक ASE, अच्छा, एटॉमिक सिमुलेटर, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट दैट फुल ये फॉर्म भी इज। कमांड बेस्ड था? हाँ, ये भी कमांड बेस्ड है, ये पाइथन बेस्ड है एक्चुअली। सो बेसिकली पाइथन इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जिसका यूज करेंगे आप कमांड्स लिख अपना सिमुलेशन डिस्क्रिप्शन के लिए, और फिर वो रन करेगा आपका मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स या एटॉम DFT और बाकी चीजें। पर उनके साथ थोड़ी लिमिटेशंस हैं, इट्स नॉट एज इवॉल्व एज लैम्प्स। और तो प्रोमैक्स सुना है मैंने। और हाँ बहुत लोग मल्टीपल यूज में, मतलब पेपर में मैंने देखा है आर्टिकल्स में, हाँ, प्रोमैक्स और लैम्प्स को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। राइट। तो ये क्या दोनों अलग चीज है या दोनों को एक साथ ही करना रहता है, ऐसा ऐसा है? सो ग्रोमैक्स रिकमेंडेड होता है अगर आप कोई बायोमोलिक्यूल सिमुलेट करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये उसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है ना। इट कैन गिव यू ओके। सुपर फास्ट स्पीड, hundreds of nanoseconds a day, like really good. And it's open source, so that's good part. And
जिस तरह के बायोमोलिक्यूल सिमुलेट करना चाहें, most of the force fields are already available in GROMACS for biomolecules. And LAMMPS is usually, I mean, you can do LAMMPS also for biomolecules, but it will be just fighting the system basically, है ना? लैम्प्स डिजाइन है मटेरियल साइंस के लिए, है ना? गोल्ड को, सिल्वर को, स्टील को टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना, उस तरह की चीजों के लिए, ना अच्छा कि अच्छा अच्छा। बायोमोलिक्यूल्स के लिए, है ना? बायोमोलिक्यूल्स के लिए इसके अलावा I'm not sure, but there is probably amber and charm कोड्स भी हैं जो बायोमोलिक्यूल्स के लिए हैं। um, इसके अलावा आपके पास है मटेरियल्स स्टूडियो ये तो बाय, जीआई बेस्ड है मटेरियल स्टूडियो। हाँ, GUI बेस्ड है, जो हम लोग यूट्यूब पे पहले ही कर चुके हैं। तो मटेरियल स्टूडियो काफ़ी आसान है, लर्निंग कर्व उसका फास्ट है, आप जल्दी सीख सकते हैं उसको, है ना? मॉलिक्यूल्स स्केच कर सकते हैं नाइसली। और सॉल्वर्स जो है तो मॉड्यूल्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि एक फोरसाइट मॉड्यूल है, वो मॉलिकुलर डायनेमिक्स कोड है बेसिकली। फिर एक DFT के लिए DFT बी प्लस है, और भी मॉड्यूल्स हैं, है ना? वो सारे सॉल्वर्स हैं। और इनके अलावा और क्या है, या मोस्टली यही सब है। और भी बहुत सारे कोड्स हैं जो आपको मॉलिकुलर डायनेमिक्स करके देंगे, है ना? बेसिक फीचर्स इंप्लीमेंट करते हैं। पर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए लैम्प्स बेस्ट सूटेड होगा, अनलेस यू आर डूइंग बायोमोलिक्यूल्स, देन क्रोमैक्स वुड बी प्रॉब्ली बेटर चॉइस। मैंने आपको हाँ। जो पेपर भेजा था, फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर एंड सॉइल पार्टिकल्स था, हम्म। एडजॉर्प्शन ऑफ पॉलीमर था, हाँ, 3 4 पॉलीमर थे, और उसके लिए बेस्ट सूटेड तो लैम्प्स होगा। या बेस्ट सूटेड लैम्प्स, नैनो पार्टिकल्स, अगर पॉलीमर्स। कोई कोई लैम्प स्टार्ट करे सीखना, तो हाँ, अगर बेसिक नॉलेज आ जाए तो आगे चल के प्रो मैक्स पे स्विच, और मतलब एम्बर पे स्विच कर सकते हैं ना लेटर, टोटली, इसी हो। टोटली। अगर आपको लैम्प्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि कैसे कमांड लाइन का यूज करके इंटरेक्ट करना है उस कोड के साथ, है ना? तो जिस तरह से लैम्प्स है वैसा ही ग्रोमैक्स भी है, दोनों ओपन सोर्स हैं। और दोनों कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं इंटरेक्शन के लिए, है ना? बस ये है कि एक मटेरियल साइंस के लिए मोस्टली है ना, इनऑर्गेनिक स्टफ, एंड द अदर वन इज बायोमोलिक्यूल्स मोस्टली। दोनों में लाइक एक बार आप एक कोई भी एक सीख गए ना अगर आप, तो दूसरा आप कर सकते हैं आसानी से। हाँ। ओके, ठीक है, आप शुरू करते हैं। अच्छा, लैम्प से शुरू करते हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या। उसके पहले है ना, मैं एक्चुअली करना चाहता था कि वी शुड नो व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस इन हाँ, लिनक्स, है ना? सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? ये आपने क्या खोला ये ये तो डॉग टेक्स्ट फाइल है एडिटर है, ना? अच्छा, ये टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर है। हाँ, मार्कडाउन फाइल्स हैं ये, ऑब्सिडियन ऐप का नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं फाइल लिख रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल है ना ये। द वे आई एम इंटरेक्टिंग विथ द कंप्यूटर इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? GUI, ऐसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना? दूसरा तरीका होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, है ना? ये हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना? फिर एक होता है TUI, टर्मिनल यूजर इंटरफेस। So CLI and TUI is actually the main interface. CLI is just a subset of TUI, I guess. जैसे यहाँ देखो आप, let me just close everything first. So I'm gonna go ahead and search the application called Terminal and open this, a new tab. ये रहा, है? तो ये है आपका टर्मिनल यूजर इंटरफेस। बेसिकली आपका कंप्यूटर है ना, योर कंप्यूटर इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रैम, your main storage SSD,
and of course cache and CPU, the individual cores, uh, within cores there are so many components, ALU and stuff like that. Then also your computer has a power management system, SMP, और GPU भी हो सकता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। अम, तो उन सभी चीजों से इंटरेक्ट करने का जो तरीका है वो एक ये है, ये जो हम देख रहे हैं ये टर्मिनल यूजर इंटरफेस। अगर मैं चाहूँ ना तो सीपीयू को यहीं से बोल सकता हूँ कि क्या करना है। लाइक आई कैन इंस्ट्रक्ट सीपीयू टू ऐड 2 + 2 फॉर मी right from here. I don't need a graphical user interface calculator for that. कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, है ना। कैलकुलेटर बेसिकली आसान कर देता है हमारे लिए उस सीपीयू से इंटरेक्ट करने के लिए ना। कंप्यूट कैलकुलेटर इज बेसिकली ट्रांसलेटर बिटवीन मी एंड द सीपीयू, हाई लेवल लैंग्वेज में बोलूँ तो, आसान भाषा में। जैसे यहाँ पे देखो आप, और ये जो दिख रहा है ना आपको टिल्डा, इसको बोलते हैं हम टिल्डा। अम, वो टिल्डा है, इट मीन्स रूट। यू आर इन द रूट ऑफ योर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है कि um, everything in a computer is simply stored in binaries, 0 and 1s, right? And everything that you see on the window is basically file. Like that, this interface that you see is in some sense a file, collection of commands. Everything is in the end of the day is a file. फाइल के साथ कुछ परमिशंस होते हैं, जैसे कि यू कैन रीड अ फाइल, यू कैन राइट टू अ फाइल, एंड यू कैन एग्जीक्यूट अ फाइल। Those are three basic permissions that a user can have on a file. जैसे कि मेरे पास रीड परमिशन हो सकता है किसी फाइल का, पर मैं उसको राइट नहीं कर सकता। दैट मीन्स आई कैन नॉट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द फाइल अनलेस आई एम द एडमिन, है ना। आई माइट हैव एग्जीक्यूट परमिशन, दैट मीन्स आई कैन एग्जीक्यूट द फाइल। जैसे कि अगर फाइल 2 + 2 को ऐड करता है मानो, है ना, तो इफ आई वांट द आंसर 4 आई हैव टू एग्जीक्यूट दैट फाइल। जैसे यहाँ पे देखो, this is pwd, that's the command. pwd stands for present working directory, yeah. So, and this is the user on this machine. I am in the home of Krishna, that is one user. There can be other users on the same computer. जैसे विंडोज में होता है ना, जब लॉग इन करते हैं तो मल्टीपल यूजर्स होता है, तो you want to log in as Krishna, you want to log in as Neeraj, you want to log in as Alok, वो सब रहता है। So that's what it is basically. Currently, I am logged in as Krishna, and this is where I am, in the home of Krishna. ls is for list. It will list everything that is there in that place in the file system. In that folder, हाँ, with the folder. हाँ. So you can see that I have this particular text file here. I have this directory here. This is another directory. This is also a directory. This is a file. This is a directory, right? A directory or folder is collection of files. And a file itself, it's just a file, collection of uh, text, basically. एक फाइल को ओपन करेंगे तो टेक्स्ट ही मिलेगा, जैसे कि चलो इसी को ओपन करके देखते हैं। नाउ नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है। जैसे टेक्स्ट को एडिट करना है तो हम लोग विंडोज में खोलते हैं नोटबुक नहीं, Notepad. हाँ Not नोटपैड। हाँ, वैसे ही अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल को खोलना है कमांड लाइन इंटरफेस या टर्मिनल में, तो आप यूज करेंगे नैनो या फिर वी आई या फिर विम। डिफरेंट एडिटर्स हैं, है ना। विम विम पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है, नैनो सिंपलेस्ट है, एंड आई यूजुअली प्रेफर नैनो इजीनेस के लिए। ओके, सो देयर यू गो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम आस्किंग नैनो to open this file for me. Okay, enter, and it opens up the file.
ये देखो, ये कह रहा है कि दैट फाइल इज ऑलरेडी ओपन समवेयर एल्स, है ना। फाइल AMS prompt or text is being edited by Krishna, मतलब कहीं और भी खुला हुआ है वही फाइल और एडिट कर रहे हो तुम उसे ऑलरेडी। डू यू वांट टू ओपन द सेम फाइल हियर एंड राइट टू इट। प्रॉब्लम ये है ना कि उधर से चेंज करोगे, इधर से चेंज, फाइल सिस्टम में हैव डिफिकल्टी लाइक व्हाट एम आई सपोज टू राइट टू द फाइल नाउ, लाइक दो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ सकती है एक ही टाइम पे, इसलिए ये अच्छा पूछ अच्छा। रहा है। हाँ, विल जस्ट से नो, वी डू नॉट वांट एंड वी विल जस्ट एंड इट। ओके, सो इसके अलावा देर आर aliases। alias मतलब दिस मीन्स दैट, जैसे कि LS, LRTH। So this is basically going to, this is called a flag। फ्लैग मतलब ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है एक कमांड के बिहेवियर को। जैसे LS आपका कमांड है जिसका काम है लिस्ट करना सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज को, है ना, उस प्लेस में। ये फ्लैग क्या करता है, जो भी आउटपुट में आएगा ना उसको एक नाइस नाइस तरीके से फॉर्मेट कर देगा अभी के लिए, ठीक है। तो हियर R इज फॉर मेक इट रीडेबल फॉर ह्यूमंस, ओके, एंड T इज प्रॉब्ली फॉर टाइम फॉर्मेटिंग। अभी देखना आपकी क्या सही से लिस्ट हो गई है, ये देखो। सो do you see this, after we run this, it's nicely formatted लाइन बाय लाइन। इसके ऊपर अगर आप जाके देखेंगे ना यहाँ पर, तो सब कुछ बस लिस्ट कर दिया है इसने, है ना। वी डोंट नो कि व्हेन दैट डायरेक्टरी वाज क्रिएटेड, वी डोंट नो द साइज ऑफ दैट फाइल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अबाउट दैट फाइल और डायरेक्टरी हियर, है ना। वो बस लिस्ट कर दिया है चुपचाप। बट हियर, हियर, डिटेल्ड व्यू में लिस्ट है। हाँ, it not only tells you what is the size of that directory or file, it also tells you when it was modified last, and it tells you who is the user, like who created it, who owns the file. And these are some permissions, which we don't have to worry about it too much actually right now. So that basically tells you whether you as a user can read the file, write to file, or execute the file. That kind of information. This is displayed here. We shouldn't have to worry about it right now actually. ऐसा करते हैं कि you can see I am in the home of Krishna, है ना, as a user. Home is one place where you have documents directory, downloads directory, desktop directory, like जैसे विंडोज में होता है ना। हाँ, so I'm gonna अच्छा go, आपने आपने ये उबंटू खोला है ना? हाँ, उबंटू एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है? yes, Ubuntu is classified as Linux। Okay, Linux। अच्छा तो हाँ, इसमें भी गूगल क्रोम वगैरह चलता है क्या? आराम से चलता है, म्यूजिक भी चलता है इसमें? सब कुछ, गेम्स, म्यूजिक, एवरीथिंग। ओके, तो फिर हम लोग इसमें इतना कमांड से क्यों ऑपरेट करते हैं जब हम लोग जीआर यूज कर सकते हैं? और हाँ, इनफैक्ट अगर अगर कमांड यूज करना है तो फिर नेचुरली विंडोज में क्यों नहीं ये टर्मिनल ऐप चला सकते? हाँ, ये ओपन सोर्स है, तो इसका मतलब है कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसे, है ना। उसे अननेसेसरी वरी नहीं करना है विंडोज के एक्टिवेशन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। We don't need to worry about paying them money, 10,000 rupees a year or 2 year or 3 year, है ना। We don't have to buy Microsoft MS services, PowerPoint, Word and everything else. With Linux, all of it comes for free. You can donate some money to the people that have written the codes. That is totally fine, you know, if they accept donation. But yeah, here everything is free, so that's a good part. अच्छा और तो सिर्फ why, ओके हाँ, हम ओके। बोलिए। मैं बोल रहा था मतलब सिर्फ ओपन सोर्स है इसलिए हम लोग लिनक्स यूज करते हैं, मतलब कुछ तो There प्रोसेसिंग are के more लिए reasons. बेनिफिट। There are more reasons. जैसे कि कंप्यूट स्पीड, अगर आप लैम्प्स रन करेंगे ना, सेम लैम्प्स
code which is optimized for Windows and for Linux. Linux is going to give you slightly better performance, not the best. Like ऐसा नहीं है कि आपका एक महीना सेव हो जाएगा, but it will definitely perform better than Windows in many cases in terms of speed. और टर्मिनल सॉरी लिनक्स में भी GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप देख सकते हैं कि मैं ऐप्स खोल सकता हूँ, साइट्स में ऐप है ना, और भी बहुत सी चीजें कर सकता हूँ जैसे कि विंडोज में हम करते हैं। इसमें भी टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड जैसा, है ना। यू डोंट हैव टू इसमें गो भी। थ्रू, हाँ, यू डोंट हैव टू डू टर्मिनल या फिर ये कमांड लाइन। यू कैन डू दैट सेम वे। पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ जो प्रॉब्लम है वो है कि इट इट स्लोज डाउन अ सुपर यूजर। अगर आपको अपना काम फास्ट करना है बिना किसी हिंड्रेंस के, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज नॉट द वे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज स्लो। हर बार जब आपको कुछ करना है तो आपको माउस को एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट करना पड़ेगा पहले, है ना। एंड नॉट जस्ट दैट, जरा सोचो कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ किसी डायरेक्टरी के साथ, ठीक है, तो और किसी फाइल के साथ, मे हैपन कि वी डू नॉट इवन हैव द ऑप्शन फॉर दैट। जैसे कि अगर एक मैं फाइल पे क्लिक करूं, है ना, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, और फिर वो मुझे एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाएगा कि ओपन द फाइल, ओपन विथ प्रॉपर्टीज एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आई वांट टू डू समथिंग विथ द फाइल, बट आई डू नॉट इवन हैव द ऑप्शन, सो आई एम लिमिटेड बाय द ऑप्शंस, राइट। तो the graphical user interface has some limitations. You cannot do everything, um, and this does not hinder you in that sense. आप जो चाहे वो कर सकते हैं. You have way much more flexibility, or you don't have to move your cursor all the time from here to there to there to there. वो सब है ना, हाथ कीबोर्ड पे रहेगा, और जो करना है आपको एक ही जगह पे कर सकते हैं आप सब कुछ। बहुत जैसे सिंपल है। विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट है। बिल्कुल, आप विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। उसका लर्निंग कर्व थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि उसके कमांड्स डिफरेंट हैं, एंड यू कैन ये यूज दैट टर्म ओनली विथ विंडोज। ये टर्मिनल भी सिमिलरली वही सिमिलर है, चीज कर रहा है। बिल्कुल वही चीज कर रहा है ये। ठीक। एंड बोलिए। नहीं नहीं, मैं समझ गई। आगे। हाँ, that's what it is done. The good part is that you learn the commands, the way to interact with CPU in Ubuntu, and then it's almost the same in Fedora or any other operating system that you go within the open source community, है ना। With Windows, you learn the command line CMD, and it's just Windows then. तो या यूजुअली क्या होता है ना कि कंप्यूटर में हम होम फोल्डर रखते हैं, है ना। होम वेयर वी हैव डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, and then we also keep one scratch folder. Scratch folder is like where we work, um, and even if we lose the file, it's okay. It's not that big of a deal. So scratch folder is where you can experiment, है ना। होम फोल्डर इज सेपरेट। होम फोल्डर इज वन, लाइक मेरे केस में एक टीबी का एक एसएसडी कार्ड है जिसमें जो होम फोल्डर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है और मेन फाइल्स रखी हुई है। स्क्रैच दो दो टीबी का एसएसडी है। स्क्रैच जहाँ पे मैं सिमुलेशंस करता हूँ, और जब फाइनलाइज हो जाता है कि व्हाट, दिस इज परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट टू पब्लिश, तो फिर मैं उस पूरी फाइल को, जो भी रेलेवेंट है, आई विल मूव टू दिस एसएसडी storage device, so that that thing is safe, है ना। So my operating system and main files remain here, but everything that I don't worry about it too much, even if you delete it, will remain here. I'm experimenting with them. So that is one way. And scratch folder is usually kept to be kept very long so that you can, experiment so much. तो हम चलते हैं स्क्रैच फोल्डर में अपने, and now you can see I am in the scratch folder. अच्छा, अपने स्क्रैच फोल्डर बनाया कैसे? हाँ, राइट।
So I can do this mkdir, that's for make directory, you know, और and then I किसी can भी say what, huh, कोई भी नाम से so किसी भी that's how नाम you से make the folder. And then I can give it a name, say for instance, this is the name I want to give to my directory. I can just give the name and hit enter, and it will create that directory for me. That's it. So now if I list everything, ls lrth, you can see that the directory has been created here, last wala, हम्म, है ना? And also you can see the modified date and time, 10:14 जून को, है ना? I don't need that, so I'm just going to sorry, delete that. अभी इसको रिमूव करने के लिए ना rm कमांड है, रिमूव, rm stands for remove, rm stands for remove, so rm and then आर्ग्यूमेंट जो होगा वो होगा एक फाइल का नाम या तो डायरेक्टरी का नाम या तो जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं। हमारे केस में वी वांट टू रिमूव अ डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, है ना? तो जो रिमूव कमांड है ना उसको रिकर्सिवली ऑपरेट करना होगा रिमूव करने के लिए एक डायरेक्टरी को, यानी कि इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, it's multiple things, right? So you have to operate remove command recursively again and again until all of them are finished, all of them are removed, right? So for that, we will use the flag R. R is for recursive. So that means recursively remove this directory in all of its contents. And then I'm just going to hit enter, and that will be removed. अगर आप एक फाइल क्रिएट करते हैं तो you don't need that recursive flag, है ना? You don't need to modify the behavior of actual command which is rm. Okay, स्क्रैच so हम ऐसा करते हैं कि एक डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir डॉक्टर आलोक, एंड देन अच्छा ये हाइफन क्यों दिया आपने हाइफन देने से ये क्या स्पेस है नहीं, वो स्पेस नहीं है, वो एक बस हाइफन है, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ डॉक्टर आलोक, मैं स्पेस दे सकता हूँ, पर स्पेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हियर इज हाउ आई कैन डू दैट, mkdir डॉक्टर आलोक, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा फिर। ओके हाँ, तो आई डोंट वांट दैट, अंडर स्कोर या हाइफन हम लोग यूज करते हैं ताकि रीडेबल रहे, ये हमारे लिए आसान होता है इससे काम। So we're going to go, so cd is for change directory, okay? Like, it's like double clicking on a folder to open that directory. अभी हम स्क्रैच फोल्डर में है मतलब स्क्रैच डायरेक्ट हाँ, और हमने उसमें एक डॉक्टर का हाँ, अनदर डायरेक्टरी बनाई we're changing the working directory. Now we are in Dr. Alok, you can see that. And you can see how this entire line is. Within home of Krishna, we are in Scratch. In that Scratch, there is a directory Dr. Alok, and that is where we are, right? So, and if I list the contents, there is nothing. It's an empty directory, है ना? तो यहाँ पर है ना, I want to create a file. I will call it file1.txt, and I'll hit enter. So we know that the Nano is the file editor, है ना? So we're calling the file editor कि hey file editor, please create this file for me and open it for editing, so I can write something in the file, अच्छा and I आपने जो can. ये txt txt is the extension of the file. That is how we know what kind of file it is. ओके तो नैनो जो है वो तो txt ही एक्सेप्ट करेगा आप नहीं जेपीजी नहीं 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 दे सकते नहीं नहीं, everything is a file.
So everything is a file, believe me, everything is a file. So that means I am giving it .txt type because that's what I want to create. I can give it anything. Like I can create dot needles, dot alok, dot krishna, सब कुछ क्योंकि एक फाइल है. पर The extension पर is वो just तो for एक्सटेंड, convenience. पर टीएक्सटी से तो पता चलता है ना कि टेक्स्ट मतलब जैसे हम विंडोज में एक्सटेंशन चेंज करते थे तो फाइल होती है, तो हाँ यहाँ पे भी मतलब कुछ तो रेलेवेंस होगा टीएक्सटी का स्पेसिफिकली, जैसे कि जेपीजी है, कि वो जैसे इमेज फाइल है। हाँ, रेलेवेंस ये है कि जब आप उसे .txt के फॉर्मेट में सेव करेंगे ना, तो आप इसे एक खास एप्लीकेशन के साथ ओपन कर सकते हैं जो बनाया गया है txt को रीड करने के लिए. जैसे कि नोटपैड, जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, है ना, जैसे कि VS कोड हो गया आपका, है ना. VS कोड इज मोर पावरफुल, इट कैन ओपन एनीथिंग. पर आप देख सकते हैं कि TXT से एक फायदा तो होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन में फिर जब आप इसे खोलना चाहेंगे तो आराम से खुलेगा बिकॉज एप्लीकेशन रिकॉग्नाइजेज दैट फॉर्मेट. पर कमांड लाइन इंटरफेस में आप जो नाम देना चाहें, जितना वाइल्ड हो सकते हैं आप हो सकते हैं. यू कैन क्रिएट व्हाटएवर यू वांट, 1 2 3 डॉट XYZ डॉट whatever. In the end, it is a file to the Linux operating system, and it will open it the same way that it opens to any other operating file. It does not care for extension. एक्सटेंशन ह्यूमंस के कन्वीनियंस के लिए है ना, एप्लीकेशन के कन्वीनियंस के लिए. जैसे कि .pdf, दैट मीन्स दैट फाइल हैज टू बी ओपन्ड बाय एक्रोबैट रीडर. ये विंडोज में जैसे है अपने पास, है ना. जैसे .html, अगर आप .html करेंगे तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ओपन इट इन अ ब्राउजर, है ना. बट open with option allows us to open the same file in a different application. तो ये कन्वीनियंस के लिए है ना. बट यहाँ पर आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं और वो खुलेगा आराम से. So I'm gonna say this is, I'm just gonna write this is my first file and done. So अच्छा this is all that अब I want to write. अच्छा अब हम फाइल खोल चुके थे और implementation चल रही है। हाँ, Nano will automatically create the file and open it so that you can write to that file. अभी आप यहाँ नीचे देखेंगे तो कुछ चीजें हैं, है ना, सबसे नीचे, है ना. ये आपको गाइड करता है कि आप किस तरह के कमांड्स दबा सकते हैं. जैसे कि कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो कट होगा टेक्स्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट. कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे, सबसे पहला देखिए यहाँ पे सबसे नीचे. दूसरा मेरा माउस वो दिख नहीं रहा है इसमें, तो ये वाला ये दिख रहा है आपको, कंट्रोल के साथ एक्स, हाँ 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 है ना. हाँ, next हो दैट गया। विल दैट विल एग्जिट फ्रॉम द एडिटर. तो ये थोड़ा सा गाइड है आपके पास, है ना, कि क्या दबा सकते हैं तो क्या होगा. जैसे यहाँ पर सेव करने के लिए लेट्स सी, ये रहा सेकंड ऑप्शन. लुक एट दिस वन, Control C, right? कंट्रोल ओ, राइट. सो कंट्रोल ओ से क्या होगा, राइट आउट. दैट मीन्स दैट कंटेंट विल बी सेव्ड टू दैट फाइल. कंट्रोल ओ मैं करता हूँ, ठीक है. कंट्रोल ओ, and then it is asking me, is this the file where you want to save that? Write to file1.txt. This is where I can still change the name of the file, but I don't want to. I will just enter. And now the content has been written to the file. अब मैं एग्जिट कर सकता हूँ इस एडिटर से by pressing Ctrl X. Out. Back अच्छा to my अभी आप terminal. फिर से I can again edit the same file using the same command nano. नैनो फाइल टीएक्सटी सर, हाँ, तो फिर इस ये बार नया नया फाइल नहीं नहीं, बना देगा। नहीं. If the file exists, it will open the file for writing. If the file does not exist, it will create the file and open for writing. ओके ठीक है। हाँ, देखो आप, it has that content, है ना. Just exit from here because I do not want to change that. अच्छा, without opening the file, we can read what is in the file. We don't have to open the file to read what is there. ठीक है.
उसके लिए कमांड होता है cat I'll just write cat file1.txt. That is the file of which I want to see the content. I'll hit enter and it will output everything that is there in the file to my console. ये देखो अब, है ना? अगर अंदर बहुत सारे कुछ लिखे तब भी वो दिखाएगा। Yes. अगर It पूरा will जर्नल पेपर हो तो भी it दिखाएगा। will it will just dump everything to your console. It does not care how long the file is. And you do not want, that is why we have different commands. Cat is for simple, small files. You can cat simple files so that you can see the contents right away, without opening it. And there are other commands that you can use to deal with larger files that are 1,000 lines long. Huh. Uh, let's open the same file and write a few more lines. Um, मैंने बस ऐसे gibberish लिख लिया है. We don't have to worry about it right now. Control O X, and then if I cat, it will dump everything to the console. This is the console that we see here. This is console. It will dump everything to the console. Now imagine I do not want to dump everything because the file is very large. What do I do? मुझे 1 मिनट दीजिएगा ना. I will just do something. Can you see my screen? I cannot see us. You Let's see cannot you. see? I can see Uh, you. अच्छा, Screen okay. sharing. Let me see हाँ how I screen तो can. मतलब दिख रहा है अभी? हाँ डेस्कटॉप। Can you see now? हाँ हाँ। Okay, perfect. So actually मैं वहां पर बैठा हूँ and there is Neeraj, so I don't want to disturb him so much actually. So yeah, this is my MacBook and this is also, well, I don't know Linux or Unix what they call it, but it doesn't matter. It's the same. The commands are same, है ना? ls करेंगे तो सब कुछ दिखेगा हमें. You can still do mkdir and all those things. जैसे यहाँ पे देखो आप, मैं cat यूज करता हूँ and then extracted words JSON. I'm just gonna copy that and paste it here. I just want to see what is there in that file. Okay, so there you go. All it has is these 3 lines. That's it. 1, 2, 3 lines. That's it. And it has nothing else. Um, so here is what I'm going to do. I am on a different machine, but I want to do things on that machine. है ना? उस Ubuntu में काम करना चाहता हूँ मैं. तो I can log in to that machine using the user in that machine to which I want to log in and the IP address of that machine using this. So SSH allows me to connect to a remotely located machine using the user on that machine and the IP address of that machine and password of that user. These are the 3 things that you're going to need to connect to a remote machine. Make sense? And मेरे केस में क्या है ना कि I often do this, so I have SSH key pair already configured. That means I don't have to enter the password again and again. My MacBook is already a trusted device for
Ubuntu. So Ubuntu knows my MacBook basically, so it won't even ask for password. ये सब बाद की बात है. We'll see those things. And you can see that I am in Ubuntu now. है ना? We have a scratch. We'll go there and look for the directory that we created, Dr. Alok. We'll go to Dr. Alok. We are there, and we have our file. Let's try catting again. File1.txt, and you can see all the contents here. ठीक है ना? Uh, you can see all those things, है ना? Okay, okay. Yeah, I would like you to speak when you can, क्योंकि मुझे ना दिख नहीं रहा है यहाँ पे. एक ही स्क्रीन है अभी मेरे पास, अच्छा so that अच्छा, I हाँ get मुझे that डाउट, feedback. हाँ हाँ Yeah. So मुझे डाउट होगा। okay, so this is where we were. If the file is very large, I can use different commands to, see what is there in the file. For instance, there is a file, a command called grep, grep. तो ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कैट करूँ इस पूरी फाइल को, तो वो क्या करेगा, सब जाके कुछ, कंटेंट। हाँ, पूरा डंप कर देगा कंसोल में, है ना? मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन पाइप दैट entire output to a different command, grep. Okay, so this line will basically do this. Cat will dump everything, okay, the output, and this pipe will pipe all of that to this command, grep. तो जो भी इसका आउटपुट है ना, वो इस कमांड को चला जाएगा. That's what this pipe is going to do. Okay, now this command still needs to know what to do with all that input that came to it, है ना? grep is usually a searching tool. You can just look for any keyword that you want. For instance, I wanted to see if all of this input from file 1 has hello in it. I wanted to search that uh, word. तो ऐसे लिखूंगा मैं, dump all the content of that file and then pipe that to grep command. That means take all the output to grep command and search for hello keyword. Hello keyword. Okay, let's enter that, and there you go. Now grep is going to give you only the line which contains that word. So you can see all we have is write hello to it, which is perfect, which makes sense because that is the only line which has that word, right? So this is one way to find if something exists in a file or not. ये, is this okay? हाँ हाँ okay. Okay, perfect. So that is one way. There is another way. It's RG. Uh, the full form is Ripgrep, which you don't have to worry about. You just write RG and your machine will understand what to do with it. RG hello. I wanted to search hello. Okay. And then I can give it the file in which I wanted to search that word for. So I can write file1.txt. So rg का जो पहला argument है वो होगा the text that you are looking for and then the file in which you are looking for. Okay, this is how you're going to use rg command. And you can see my rg tells me that in this file on line number 5, this is the text that contains hello. RG is faster and way better. It not only tells you entire line where the content, the word exists, but it also tells you the line number. So that's good. अच्छा, इसके अलावा you can run your RG command without telling it which file. Okay, I'm looking for the hello word and I'm not going to tell it which file. Okay, like किस फाइल में ढूंढना है ये शब्द, मैं इसे नहीं बताऊंगा. तो what it's going to do then is that it will check for all the files in this directory. Yes, जितने files है 10,000, it will go through everything
And in each file, it will figure out where that hello is. And if a line contains that hello, it will just output that to that console. From all the files, it will give you everything. Right now, the only thing that we have is this file. So it tells you that, oh, hey, look, file 1.txt has on line number 5 this text which contains hello. So here it is. So it told you, right, that thing. You know what? Just for checking, let's just do this. Hello file2.txt. We'll write that. And I'll just write this is hello world text file and whatever, and then hello. Okay, just going to save it, and then we are going to again run rg hello. And you can see it tells you that in file 1.txt line number 5, there's this line that contains hello. You know, it will also highlight that word so that you can see it clearly for visual convenience. And then it tells you that there's also another file called file2.txt, which has in line number 1 hello, as well as in line number 12 hello. So what I'm trying to help you understand is that you can look for a keyword in all the files within that directory और एक्चुअली using हमने फाइल टू जब बनाया तो हमने तो लिखा नहीं वहाँ पे hello, क्या लिखा था नहीं क्या? लिखा। अच्छा फाइल टू में आपने हेलो लिखा था हाँ हाँ, मतलब I I I just राइट हेलो created that. Yes, ओके file 2 फाइल टू has everything. ओके तो हाँ, ओके ओके अभी लिखा I actually wrote that when I was editing it, all those ओके things. So, huh. Okay, perfect. So, this is चल what it हम is. हम लोग हमेशा फाइल डॉट टीएक्सटी लिखते हैं क्या ऐसा नहीं फाइल टू नहीं, सिर्फ फाइल टू सिर्फ लिख के नहीं चलता है फाइल बिल्कुल वन फाइल चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे फाइल, and I don't even have to write an extension. I can just write nano file, and I can write whatever I want to it, and then control O for saving, and then X for out, going out. And then I'll show you what this file has. ऐसा Cat कर the सकते हैं क्या file. ओके You can ओके see, that's what I'm telling you. Everything in Linux is a file. In the end, everything is a file. Even MP4, MP3, JPEG, GIF, whatever, PDF, everything is a file in the end. Or that you can see by using these commands कि क्या है उस फाइल में। हाँ, ठीक है तो yeah, let me see what other command we can learn. अच्छा इसका कोई Okay, मैटर yes. वो है क्या सोर्स मटेरियल मैं पढ़ हाँ, सकता अब हूँ yes, I will share the notes that I have with me so that you can see them. अभी सोचो कि आपके पास you have these 3 files, okay, and you want to create a copy of any of these files. ठीक है, कई बार होगा कि we want to do that. We can use cp for copy. We want to copy file 1.txt to which file? Like I wanted to copy contents of file 1.txt and then I have to tell it कि कौन से फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ मैं। तो मैं बोल सकता हूँ इसे कि जस्ट वांट टू कॉपी टू alok.in। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक नया फाइल क्रिएट करेगा alok.in और उसमें इसके पूरे कंटेंट्स को डाल देगा। तो So ये that's आलोक basically डॉट इन भी copy. एक टेक्स्ट फाइल है Everything is a file in the end. So yeah, you can have binary files and text files. So alok.in is a text file right now. We can store binary in it. There is nothing wrong with that. अभी आप अगर लिस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक नया फाइल क्रिएट किया जा चुका है alok.in, है ना। अगर मैं कैट करूं alok.in एंड देन अगर मैं कैट करूं फाइल 1 को हमने कॉपी किया था फाइल 1.txt, तो आप देखेंगे कि दोनों का जो कंटेंट है ना सेम होगा, आपसे है ना। So this is how you can copy contents of one file into a different file.
It can be a totally new file or it can be a pre-existing file. So we created a new file and copied to that. Let's go back to copy command. ये रहा. हम इस बार क्या करेंगे कि हम लोग है ना, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू फाइल टू में है क्या आखिरकार. ये रहा फाइल टू. आप देख सकते हैं कि क्या है उसके अंदर, है ना. अब ये थोड़ा बीच में आ रहा है, इसको छोटा कर देते हैं. हाँ. अब हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे फाइल टू, फाइल वन को फाइल टू में. ठीक है. अगर मैं फाइल वन को पूरी तरह से फाइल टू में कॉपी कर दूं तो एक प्रॉब्लम है कि फाइल टू का जो कंटेंट है ना वो रिमूव हो जाएगा और फाइल वन का कंटेंट पूरा फाइल टू में चला जाएगा. करके देख लेते हैं. ये मैंने कर दिया कॉपी. अब फिर से कैट करते हैं हम फाइल टू को. एंड यू कैन सी दैट फाइल टू नो लॉन्गर हैज ऑल ऑफ दिस टेक्स्ट, है ना. बल्कि फाइल वन का कंटेंट अब इसमें दिखाई देगा आपको. आप फाइल वन को भी आउटपुट करके देख सकते हैं. देखो अब फाइल वन एंड फाइल टू आर नाउ द सेम, है ना. और फाइल टू पूरा रिप्लेस हो चुका है. So when copying a file into a new one, be careful. If the file exists, it will just overwrite that file. ठीक है. One more useful command is move. MV stands for move. Okay. Imagine that I r- I gave it name alog.in, but that's not what I wanted to name. I wanted to name it alog.txt. Okay. That was my mistake that I created alog.in. And I don't like that extension. I hate that extension. So here is what I'm going to do. I'm going to take alog.in and move it to a different file called alog.txt. I'm going to move it. That means alog.in will be deleted and alog.txt will be created with the same content. I'm moving the contents of one file into a different one. Let's do that. Alog.in, alog.txt. There you go. Do you see the difference now? Alog.in was moved to alog.txt. नेक्स्ट ये समझ गया। ये R W-R-डैश इसका क्या मतलब है, क्या हाँ. बताना तो चाहते हैं? right. So these I think so the first one, ये जो dash है ना, it tells you whether the content is the item is file or directory. ओके For a file, it will remain dash. If it was a directory, यहाँ पे D लिखा होता. ओके हाँ. And then these three characters, they tell you what kind of permission do you have on that file. Okay. So let's say read, write, and यहाँ पे hyphen लिखा है. That means this is not an executable file. You cannot execute right now. Okay. Um, and then these three, I think, are going to be, you know what? Let me go ahead and check this, confirm this. File permissions, file permissions. ये रहा. देखो सबसे पहला जो वो है ना, वो टाइप बताता है डायरेक्टरी है या फाइल है. ये बाकी के तीन है, ये वाले सबसे पहला वो बताता है कि यूजर के पास किस तरह की परमिशंस हैं उस फाइल पर या डायरेक्टरी पर. ठीक है. यूजर के बारे में है ये. मैं हूँ यूजर कृष्णा. तो मैं क्या कर सकता हूँ उस फाइल के साथ, ये इन तीन कैरेक्टर से पता चलेगा. उसके बाद ग्रुप होता है. कंप्यूटर में है ना, हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. फिर क्या कर सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर हम बहुत सारे यूजर डाल सकते हैं, जैसे कि कृष्णा, आलोक, नीरज, सारे केमिकल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, है ना. तो दिस टेल्स यू वेदर ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप केमिकल इंजीनियरिंग हैव एनी परमिशन ऑन द फाइल और नॉट. ठीक है. इट्स नॉट specifically about you or me. It's about the people that are added to the chemical engineering group, है ना, whether they have permission on the file or not. That's what it tells you. And then there is others, which I'm not sure exactly what that is, but you get the idea. It's for, you know, people, whether they have permission on it or not. That's what it tells you, है ना. So this is what it is.
ये जो प्लस साइन है ना, आई थिंक दैट्स व्हाट, वेल आई एम नॉट श्योर, प्लस साइन और एक्स यहाँ पे, वेल समय के साथ हमें दिखाई देगा, बट यू डोंट हैव टू अच्छा वरी अबाउट इट राइट नाउ एक्चुअली। अच्छा, ये वन वन क्यों डालते हैं? एक बार हेलो फिर से हेलो बोलिए। हेलो, वन 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 आपने डाला ना, अलो डॉट डॉलर वन, इसका क्या मतलब है? ये खुद ही आया क्या? ये जो नहीं नहीं नहीं, ये वन, वन हाँ। नहीं है, ये वन नहीं है, ये एल है। वन ओके। ऐसा दिखाई देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एल लिस्ट के लिए, लिस्टिंग के लिए एल एल क्यों नहीं, डाले हम? एल एस एक्चुअल कमांड है ना जो, वो है एल एस लिस्ट एल के एस। लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, ओके। ये देखो, जब आप एल एस करेंगे तो हॉरिजॉन्टली रखता है सभी फाइल्स को, ये आउटपुट जो है ओके। वो हॉरिजॉन्टल होगा, एंड इट ओके। डज नॉट टेल यू date modified and everything else, it does not tell you that. तो ls lrth, this is what will give you this nice little format that you can see here, see, ओके ओके, हाँ है ना। तो मैंने क्या किया है कि एक होता है कमांड alias, alias l इक्वल टू ls lrth, which means अगर मैं ये कर दूंगा ना, तो it means कि every time I write l, that would mean ls lrth। तो ये ओके। मैं अपनी आसानी के लिए ऐसा कर रखा हूँ इस लैपटॉप में, कि मैं अच्छा हमेशा सिर्फ l डालूंगा और उसका मीनिंग होगा कि मैं चलो। ये लिखना चाहता हूँ, ये मेरी कन्वीनियंस के लिए है ना। यू कैन सी दैट, इट्स नाइस। जितनी बार मैं एक बेसिकली नया, मैंने देखा ये कमांड प्रॉम्प्ट से चीजें और फास्ट हो रही हैं, जैसे मतलब मुझे लगता था अरे ज्यादा इसी। हाँ हाँ, सुपर फास्ट, तो बहुत मूविंग थिंग्स, कॉपिंग थिंग्स, रिमूविंग थिंग्स, फाइंडिंग थिंग्स वेरी फास्ट। fast। तो अच्छा, हम जो ये कोड सीख रहे हैं, ये जो हम्म, कोड है, ये सिमिलर कोड हम आगे यूज करेंगे फिर उसको, अभी ओ जब यस, मतलब ये तो तो, डमी, ये तो हम डमी फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, पर आप देखिएगा कि जब हम एक्चुअल सिमुलेशन करेंगे, तो कितना हेल्पफुल होगा ये सब कुछ, लाइक ओके यू कैन डू, या सुपर यूजर्स डू दिस, इट्स वेरी ओके। फास्ट एंड इट्स एक शब्द है कॉग्निटिव लोडिंग, कॉग्निटिव लोड। जब आप किसी चीज को देखते हैं ना, तो आपके दिमाग में कॉग्निटिव लोड आता है, क्योंकि विजुअल्स को आपको प्रोसेस करना होता है ना। तो अगर आप टर्मिनल पे है ना, तो यू डोंट हैव सो मच ऑफ कॉग्निटिव लोड बिकॉज देयर इज नॉट टू मच टू डिस्ट्रैक्ट यू। पर अगर आप GUI में हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एक्चुअली। So the terminal actually removes that cognitive load, from getting in the way of you and your work. Yeah, so it takes off that cognitive load from the equation. Let's go to, so we have seen all these things. We now know what is alias. I wanted to tell you that this is just one window, like one window, between me and the CPU, the machine, and I can create multiple such windows. Like here, I can be working on, argon simulation. I can create a new window. Um, I can just do command N to create a new window, or I can also, let me see, I already have these. You can see here plus sign, ये corner पे. अच्छा, I जैसे can just न्यू click on, न्यू टैब होता है वैसे। बिल्कुल, it's a new tab. I click on it and it creates me a new tab. So this tab is in my MacBook, right? I have to SSH into my remote machine Ubuntu, है ना, ताकि मैं वहां पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकूं। एंड देन आई रिमेंबर द पाथ, इट्स इन स्क्रैच, डॉक्टर आलोक, एंड देन वी कैन सी थिंग्स। तो आपने देखा कि जब मैंने नया विंडो खोला, नया टैब खोला, तो आई कैन सिंपली राइट एल एंड इट अंडरस्टैंड्स व्हाट दैट मीन्स, है ना। it understand it understands what that means because there's a file called bashrc. Now bashrc is very important file. Every time we open a new terminal, this file runs and then everything else happens। ठीक है, जितनी बार मैं नया टैब खोलूंगा ना टर्मिनल, उतनी बार ये वाली फाइल पहले रन होगी, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। ये फाइल क्या करता है कि इट विल मेक श्योर दैट योर टर्मिनल इज रेडी फॉर यू टू यूज। ठीक है, चलो हम देखते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या आखिरकार। हम लोग कैसे देख सकते हैं, एक तो हम कैट कर सकते हैं इसे, है ना।
ये जो टिल्ड है ना, इट टेल्स कि गो टू द रूट ऑफ द यूजर इन द फाइल सिस्टम, एंड देन इन दैट डायरेक्टरी देर इज अ फाइल कॉल्ड bashrc, और वो जो है ना, डॉट मीन्स हाँ। द फाइल इज हिडन. ओके। Dot means the file is hidden. So let me show you how dot works. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फाइल हैं. मान लो कि मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, पर मैं नहीं चाहता कि वो फाइल मुझे हर बार एल करने पे दिखाई दे. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट हो. तो मैं कर सकता हूँ ये. I can create a file with nano maybe dot uh, whatever name I want to give it, and then enter. I can write whatever in I want, and then control O, save, and then control X out. एंड अगर मैं अब करूं L तो मुझे वो फाइल नहीं दिखाई देगी. इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये है कि वो फाइल हिडन है. ठीक है। ठीक है. हाँ. अगर आप उस फाइल को भी देखना चाहते हैं तो आप ls के साथ एक फ्लैग डालेंगे, LA, लिस्ट all the files including hidden ones, and you can see that this file exists in that place. है ना? तो So that's how. वो डॉट सिक्योरिटी डॉट डालता हूँ तो वो हिडन Yes, that's how you जैसे create मैं। a hidden file. ठीक है. um now एक और कमांड है, टच. अभी तक हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं नैनो का यूज करके. जरा सोचिए कि मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, पर मुझे उसे लिखना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, मुझे बस एम्प्टी फाइल क्रिएट करना है. ठीक है. नैनो क्या करता है, उस फाइल को क्रिएट करेगा और ओपन कर देगा उस फाइल को, ताकि उस पर आप कुछ लिख सकें. मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ फाइल क्रिएट करनी है, एक एम्प्टी फाइल. मुझे एक विंडो ओपन नहीं करना है जहां पे मैं लिख सकूं उस फाइल में. तो मैं यूज कर सकता हूँ टच. आई कैन क्रिएट टच आलोक. ये क्या करेगा, ये बस फाइल को क्रिएट करेगा चुपचाप, एम्प्टी फाइल. इट डजंट केयर, इट वोंट ओपन फॉर यू, सो दैट यू कैन राइट टू इट. ठीक है. अगर मैं अब देखूं तो आप देख सकते हैं कि आलोक फाइल exists, and it has almost this is the size, I think. Yeah, it has almost nothing in it. You can see that, right? 0 bytes. So touch command is also useful. आप चिंता मत करिए, मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा after this meeting. And yeah, so let's go and check what is there in the bashrc file. This is very special file, very important file. And whenever we open a new terminal, this is the file that runs first, so that it can, you know, make sure that the terminal is ready for you to use as a user. Um, let's just cat that file. Okay, bad. Cat bashrc. That's it. So this is all the content. आप देख सकते हैं कि इसने सब कुछ डंप कर दिया है मेरे console पे, है ना? अच्छा। And it's a large file. You can see that, right? देखिए, quite large. इस तरह के फाइल्स के लिए हमारे पास rg और grep तरह के कमांड हैं, है ना? So you can see the first line is added by source code installer, export this path. All the lines that start with hash are comments. Therefore, the user to read and understand. It's not for the machine to execute. है ना? ये भी पूरा आपका comment है ना? Nonetheless, this is like a large file. We don't have to worry about it so much. Um, and also I can use now rg. I'm looking for a keyword alias. I want to know if that letter set of characters exists in file bashrc. I can just run rg command. We have seen how that works, right? And rg found us many instances of lines where that word exists. You can see that, right? Different बट lines. एलियास तो एक कमांड भी है, मतलब कमांड है। Yes, alias उसमें is a क्या था? command. Alias is a command, but that has to be first in the command line to और be जी treated कमांड। as command. हमने जो लिखा है वो ये है, सबसे पहली चीज है rg, and so it becomes a command, है ना?
एंड जो सेकंड है, जो सॉरी जो फर्स्ट, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू दैट कमांड। ओके, so when we write RG, we basically activated RG. We said, hey, RG, start listening to me. That's what we did. And RG is now active. It's like, okay, tell me, what do you want to look for and which file you want to search in? That's what RG starts asking you. And you have to provide answer in that order. You have to tell it ki what you're looking for in which file. You can skip, the name of the file. In that case, it will just search through every file that is available there. That's how RG works. है ना? So alias is not a command anymore. RG is active on it. So to RG is just a word. That makes sense? आज के लिए इतना रखें क्या? Yeah, this is good enough. This is और just मैं पढ़ूंगा जाके huh, शेयर कर देना नोट्स। मैं of अभी अपने course. पीसी में उबंटू का डालने का कुछ ऐसे Yeah. कर सकते हैं। उसकी कोई डाउनलोड डाउनलोड आती है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते I I have this like a small notes file and I will share that हैं? with you as a PDF if you want. There it is. But yeah. So that was like that is important part, the command line interface. कल या फिर नेक्स्ट आवर जब हम करेंगे तो we will simulate argon. Why argon? Because argon is very small. I mean, not small. I mean, argon is very simplest case. It's not really interacting with any other atom. It's just non-idle, I mean, idle gas. So it's not interacting. So we don't have to worry about a lot of forces. We don't have to worry, all the force fields that exist there. We don't have to worry about so many constants. All we have to do is create a box, fill in some, atoms, and uh, tell lamps how we want to model the अच्छा, forces. हम इतनी जल्दी लैंड्स में चले जाएंगे तो I mean, we can. So we have seen all these little commands, and these are the commands that we can use to write everything, do everything. We know how to create a text file and write to that text file. That is what we need, really. Everything else is useful when you want to debug, when you want to do a lot of other things. But lamps शुरू करने के लिए, yeah, why not? You need to create a file and ask your lamps to run that file. Like, hey, lamps, here is what I want. Can you do this for me? And it will just do that. So yeah, we'll start with argon gas simulation. We'll just simulate it. We don't worry about its thermal conductivity, its compressibility, and all those other things, which can come later. है ना, हम लोग देख सकते हैं. So argon is the simplest case that we can do. We'll model argon using LJ potential, है ना? And we'll calculate possibly thermal conductivity or heat transfer in it, hot, cold, and then how the heat transfers. Hopefully, we can calculate thermal conductivity. And uh, from that simulation, you'll almost learn most of the basics. And then we'll move towards water simulation. We can simulate. These are simplest case. They will help you learn the basics and how you can model atoms, everything, all the things. And then we'll model water. The water is going to have interactive forces. So like in water, you will have to model the OH bond, bond compression extension. And then also that angle, hydrogen ka angle that you have to model. So there is bond, there is angle, and then there is non-interactive forces like how this oxygen is interacting with the hydrogen of other water molecule. And what hydrogen bonding, all those. So those will be the forces that will be there in the water molecule. We can pick a simpler molecule than the water, possibly, if you want, just to have that slow progression towards यस यस modeling complicated systems. Yeah, धीरे धीरे ही मैं but yeah. So yeah, this was the basics to Linux. By the end of this 1 hour, now you should be able to create file, write to the file, save file, move file to a different file, search for keywords in a file,
um, remove the file, create directory, remove directories. These are very basic operations that you can perform on any file or directory basically. And so, yeah, you should be able to do those things now. Uh, ठीक है, l- मुझे शेयर कर दो. I'll share with you the PDF and also share with you how you can install WSL in your Windows machine so that you can do all these things in हाँ, कर your सकते हो. मैं मुझे